1996 batch. So one of my colleague also mentioned, 2022, the IT elections are held every 4 years, which is that event is called Plenipotentiary Conference. So in 2022, last Plenipotentiary Conference was held. So borders, it is, and future, it is all going to be cyber warfare, a wastage. So cyber security also is a sustainability enabler. So all, as I mentioned, it is increasing and it is manifesting in many ways, like men and women, rural, urban, haves and have-nots, old and young, and on top of it, the cyber security. It is it has become a part of our life. Just mentioned, but it provides immense opportunities for us through WTISD. It asks, take the agenda of digital transformation forward. So, out here, as we all know that India is globally aligned with the SDGs, and we are trying to bridge the digital divide. As Government of India has in the past, in the last 10 years, launched various schemes like BharatNet Initiative, National Digital Literacy Mission, Grameen Digital Saksharta Abhiyan, and on top of that, I was reading about it, the Supreme Court of India has made it right to access the internet as a fundamental right, and has made it part of the right to privacy and right to education. My greetings to the ex-chairman, honorary secretary of the institute, senior engineers, my friends and colleagues on this year's. What is digital innovation for sustainable technology to address environmental, social, and inclusive world for current and future generations? Next, please. Outsourced mapping, emergency communication systems, and post-disaster needs assessments. Supply chain transparency, utilizing blockchain and other digital technologies to enhance transparency and traceability in supply chains, promoting ethical sourcing, fair labor practices, and sustainable production methods. Access solution to pressing the societal challenges. World Telecommunication and Information Society Day also raises awareness about the digital global divide. Progress. But all of us were caught off guard by the magnitude of change. The future of work is here, and it came early. Work is no longer confined to assigned physical city in itself, with solutions at each touch point, trying to maximize the creativity, imagination, and productivity of a workforce constantly pushing the limits of disconnected, and systems are reaching a state of perfection, the only thing in human history, fueled by exponential digitization, mobilization, maximum potential. Future doesn't just happen. You make it happen. So it is very important that as creators, as innovators, as engineers, when we are innovating, developing any technology, anything, we should have a clear intent of achieving the whole good. Sadhuna sarvhita. Sadhu are those people who think of hit of everybody, that is good of everyone. So work is thy duty, reward is not thy concern. Again, from the eternal wisdom of Gita, we should work without considering the fruits. And if we are doing these two things, while both as an engineer and as an individual, I am sure that we will have a better future for the next generation. Another thing I would say for sustainable development is from Chanakya Niti, that is Ati Rupen Sitave, Ati Garven Ravan, Ati Darpain Bali Bandhavam, Ati Sarvat Varjat. It was
अति रूपवती होने के कारण सीता का हरण हुआ, अति अहंकारी होने का कारण रावण की हत्या हुई, और अति दानवीर होने के कारण बाली का बंधन हुआ। Taken in excess is poison. So technology from our holy books and our experiences, excess of everything is bad. Digital payment systems, we do it at home also. We make payments through computers and our mobile phones, and Fitch solutions are SkyScript will provide innovative digital solutions for payment of processing, online banking, investment and personal finance management. Then ride sharing services. We have digital rides also. Now electric cars have come into Jammu. And guest of honor, who is also keynote speaker, Shri Pratish Khanna, Deputy DG, Department of Telecom, J&K, Jammu. Esteemed engineers and distinguished guests, on this occasion, we are gathered today to mark World Telecommunication Day, and I am honored to be part of the day's celebrations. A lot of light shall be thrown on the subject by speakers to follow. However, we can say that as engineers we have played a crucial role in shaping the global telecommunication. Developments have taken place. The world has turned into a global village. So comes the challenges of sustainability. That is why the theme topic for the day has been chosen as Digital Innovation for Sustainable Development. By the response you have shown to the programs, because these all programs are meant to create awareness, and you all go back home and try to spread the message that we have to bridge the digital divide, and at the same time we have to do sustainable development. So on this note, I request you all to kindly join us for high. आज का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर और सुचारू था। इसमें कोई शक नहीं कि जो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे है, इसके महत्व, इसका एक अलग महत्व है कि हम अपने इस संसार को या अपने इस देश को कैसे दूर संचार से माध्यम से हम बढ़ा सकते हैं। आज जैसे कि आपने स्पीकर्स को सुना होगा कि हम कैसे इस दूर संचार के माध्यम से या टेलीकॉम के माध्यम से हम कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपना कर सकते हैं ताकि पृथ्वी और मानव जाति का भला। सेक्रेटरी ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, जम्मू लोकल सेंटर। आज जो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है, बिकॉज पूरे दुनिया भर में इस चीज़ को माना जाता है कि जितना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स जिसको हम नॉर्मल भाषा में इंटरनेट या कम्युनिकेशन मीडियम कहते हैं, जितना वो ज़्यादा एडवांस होगा उतना ज़्यादा लोग ईजिली कम्युनिकेट कर पाएंगे, जुड़ेंगे एक दूसरे से। लेकिन उसके साथ साथ उसके हैजर्ड्स भी, जिस तरीके से हम चैलेंजेस उसके फेस कर रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी मीन्स जितना हम ज़्यादा कनेक्टेड हो रहे हैं मोबाइल के थ्रू, उतना हम फिजिकली लोगों से नहीं मिल रहे हैं, उतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स और भी अलग तरीके से आ रही हैं। जहाँ सोल्यूशंस हैं वहाँ प्रॉब्लम्स भी हैं। लेकिन ये भी देखना ज़रूरी है कि इंटरनेट हर एक के पास हो ताकि वो अपनी ईज में भी, आज जो बिजनेसेस हैं ऑपरेट कर रहे हैं, जिस तरीके से यूपीआई सिस्टम आप देख रहे हैं इंडिया में डेवलप हुआ, इतना प्रोग्रेस कर रहा है कि आज आप कहीं पे भी जाते हैं आप कैशलेस पेमेंट्स कर रहे हैं। तो ये भी एक इनोवेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ही आज पॉसिबल है। सस्टेनेबिलिटी इसमें भी आती है, लेकिन कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी का गोल ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है इंटरनेट पहुँचे। आज भी दुनिया भर में 2.6 बिलियन ऐसे लोग हैं जिनके पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, तो हमें उन लोगों तक भी इंटरनेट को पहुंचाना है। और साथ साथ में एनवायरनमेंट को लेके भी ये इंश्योर करना है कि ये जो भी हम एडवांसमेंट्स करें वो सस्टेनेबल हो और लोगों को इसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़े और पॉजिटिव इम्पैक्ट ही इसका मैक्सिमम हो। और टेक्नोलॉजी जितनी भी, जैसे 4G के बाद 5G आएगा, 5G के बाद और कोई टेक्नोलॉजीज आएंगी, उनकी वजह से भी एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट ना पड़े। और लेकिन एडवांसमेंट तो करनी है, साथ साथ में वो एडवांसमेंट ऐसी होनी चाहिए जिसके कि हमारी कम्युनिटी पे कोई इफेक्ट ना हो, नेगेटिव इफेक्ट ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट